गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स गुड टू सी यू ऑल हियर अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस मॉनसून फेस्टिवल व्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप सभी को मेरे साथ रंगत मध्य अंडमान के रामन बगीचा बीच लेकर जाने वाली हूँ, जहाँ पर वन विभाग के द्वारा 2 दिवसीय मॉनसून बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यह उत्सव 2 दिनों के लिए 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। इस उत्सव में फैशन, संगीत, भोजन, मनोरंजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और बहुत कुछ शामिल था। उत्सव के दौरान प्रत्येक दिन आप शास्त्रीय और लोक धुन सुन सकते हैं, नृत्य प्रदर्शन का आनंद लेना, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना, पारंपरिक हस्तशिल्प की खरीदारी करना, डिपार्टमेंटल स्टॉल्स को विजिट करना और समुद्र तट का आनंद भी ले सकते हैं। दुनिया भर में भारत को रंग, भोजन, त्योहारों, विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आप भारत के हर कोने को करीब से जानना चाहते हैं तो मॉनसून के दौरान आने वाले त्योहारों से बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। आज मैं आपको ऐसा ही एक उत्सव रंगत मध्य अंडमान के रामन बगीचा नामक इस बीच में हो रहे बहुत ही रोमांचक और मजेदार मॉनसून उत्सव के सार पर लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
Aquatic animal of India. Options are saltwater crocodile, Gangetic dolphin, dugong, parrotfish, ornamental turtle. Raman, zoologists observe for teachers, students, or jockey staffs and workers are.
I have for you today. Thanks for watching. If you enjoyed my video and want to hear from me again, be sure to hit the like and subscribe button before you go. और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए।